Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine, student. Welcome in your Oxford Progressive English Class 4. Student, today we are going to complete our remaining story. So let's start. Because they would often jump on his back and dance about laughing at Bobo's slow walk. They knew he could not shake them off or stop them. I will help you, said Bobo. He had thought of a plan to teach a monkeys a lesson, but first you must go and hunt for a boat. What is the using of that? Said the agitated bird, in surprise. I'm not clever at rowing. Never you mind, said Bobo. What you must do is to find a boat with a hole in it. The hole must be the right size for me. So the agent bird agreed that he and Bobo should meet again in 7 days, and the agent bird at once set out to look for a boat with the right side hole in it. बोबो को भी बंदरों पर बहुत गुस्सा था। वो अक्सर उसकी कमर पर चढ़ जाते थे, चलते कूदते नाचते थे और फिर उस पर हंसते थे। उसके स्लो चलने पर वो हंसते थे और उनको पता था कि वो अपने आप को शेक करके उन्हें नीचे नहीं गिरा सकता, तो उस पर चढ़ के ज़्यादा हंसी मजाक करते थे। बोबो ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने पहले ही सोच रखा था कि बंदरों को कैसे सबक सिखाया जाए, लेकिन पहले तुम्हें जाना होगा एक कश्ती ढूंढने के लिए। एजेंट बर्ड ने हैरानी से पूछा, कश्ती का क्या इस्तेमाल होगा? मैं कश्ती चलाने में अच्छा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बोबो ने कहा। बस तुम्हें करना यह है कि तुम्हें एक कश्ती तलाश करनी है इसमें एक सुराख हो, जो टॉर्टस ने कहा कि मेरी साइज़ के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब हो, सही हो, जिसमें मैं फ़िक्स आ जाऊँ। तो एजेंट बर्ड इस बात से रजामंद हो गया कि वो बोबो से 7 दिनों के बाद दोबारा मिलेगा। एजेंट बर्ड ने फ़ौरन ही अपना काम शुरू कर दिया, कश्ती तलाश करने के लिए जिसमें मुनासिब होल हो। There were lots of old boats lying about and he was not long in finding one. After 7 days, he and Bobo met at the place where the boat was lying. Then Bobo escaped into the hole so that the water could not get any more. The people who were standing about helped to push the boat out from the shore and she started away downstream, with the aged bird standing up in her. Presently 5 monkeys who were sitting in a row on the branch of a tree spied the boat, and one of them called out, Agent Bird, where are you going? Just for a nice trip, he said. May we come with you, you splendid bird? The monkeys asked. Certainly, he answered politely. He had recognized them. They were 5 of the monkeys who had so carefully pulled out his feathers and mocked him. So these 5 monkeys scrambled, chattering into the boat. Then, while they were enjoying themselves, drafting in the boat, another monkey is also one of the feather pullers called from another tree, and he and 3 others that were same family dropped it into the boat of their branch. वहाँ काफ़ी कश्तियाँ रखी हुई थी, वहाँ पर काफ़ी कश्तियाँ मौजूद थी। एजिनेटर बर्ड को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 7 दिनों के बाद वो उसी जगह मिले जहाँ पर वो बोट रखी थी। फिर वो रेंग रेंग कर उस सुराख में अंदर गया ताकि पानी कश्ती में मज़ीद ना आ सके। उस वक़्त जो लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने मदद की कश्ती को धकेलने में। वो नीचे की तरफ जा रही थी और एजेंट बर्ड उसमें खड़ा हो गया। इत्तेफाक से 5 बंदर जो दरख्त की शाख के ऊपर बैठे हुए थे, वो कश्ती को देख रहे थे। उस कश्ती की जासूसी कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा, एजेंट बर्ड, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बड़े ही मज़ेदार ट्रिप पर जा रहे हैं। बंदरों ने पूछा, ईशान परिंदे, हम तुम्हारे साथ आएं? यकीनन, बड़ी तमीज़ से उसने जवाब दिया। वो उनको पहचान गया था। वही 5 थे जिन्होंने ज़ालिमाना तरह से उसके पर नोचे थे और उसका मजाक उड़ाया था। When a lot of other monkeys saw these 9 having such a pleasant boat trip, then they wanted to get in too, but the agent bird wouldn't have them on board. What he said was,
that more would overloaded the boat. But the real reason was that he only wanted the nine who had pulled out his feathers and laughed it. The boat drifted out from the river into the sea, and the waves began to rock her. The aged bird pretended there was danger and told the monkeys to tie their tails together, two and two, saying that five small ones must sit on one side of the boat and four opposite, so that she should not roll so much. The monkeys tied their tails together and sit just as he said. They were very much wanted to stop this rolling, for they were fattened. When they were all neatly arranged like this, with their tails tied, the agitated bird called, Bobo, can you hear me? I'm going to fly off now. Yes, I hear you, answered Bobo. I'll swim off too. So the agitated bird flew up, and the tortoise popped down out of the hole and into the water, and then, of course, the water rushed in through the hole and the boat began to sink. The monkeys tried to swim, which they could usually do quite well, but their tails were tied together, so they had a dreadful time. In fact, they only just managed to get to shore, some half drowned and all very much frightened and miserable. As for the aged bird, as he flew away, he shouted out, Now, you horrible monkeys, see what you get. That day onwards, the monkeys did not bother the aged bird or the tortoise. They carried on being noisy and lively but not play tricks on or upset the other animals. एजेंट बर्ड उड़ गया और कछुआ पॉपिंग की आवाज़ के साथ निकल गया, पानी के अंदर चला गया। अब जब वो कश्ती के सुराख से निकल गया तो पानी कश्ती में अंदर आने लगा, कश्ती में अंदर भरने लगा तो कश्ती डूबने लगी। बंदरों ने तैरने की ख्वाहिश की, जो कि आमतौर पर वो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनके टेल्स आपस में बंधे हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ा खौफनाक वक्त देखा। वो बहुत मुश्किल से साहिल पर पहुंचे। बंदर बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। फिर जब एजेंट बर्ड उड़ रहा था तो उसने आवाज़ लगाई, अब बुरे बंदर, कि मेरे फीदर को नोचने का क्या नतीजा मिला। उसके बाद बंदरों ने कभी एजेंट बर्ड और कछुए को परेशान नहीं किया, किसी को भी तंग नहीं किया। वो शोर मचाते, हंसी मजाक करते, पर किसी दूसरे को अपसेट नहीं करते थे। Is this? You have to read this story again and answer these questions. And also complete exercise C, which is on book page number 86. Take care. Allah Hafiz.